Good morning, students. Revision of HTML chapter number 10, Understanding HTML. The name of the chapter is Understanding HTML. Yesterday we discussed about the developer of HTML, the full forms. ठीक है, तो फुल फॉर्म जो इस चैप्टर में से आ सकती है, वन इज HTML, second one is W3C. So I am writing the full forms here. Remember these. Then there is another one, ISO. So these are the different. Okay, you will have to remember these. And after that, we also discussed two types of two sections of HTML document. So here is head and body. Then structure of HTML document. So start with HTML, then head, then title close, then head close, then body tag start, then body tag close, then HTML close. Then better note down these questions better. Okay, these are the questions. Forms, two sections of HTML, structure of HTML, document, extension of, okay, extension of HTML file. Okay, so the extension of HTML document, it is .html or .htm. These are the two extensions we can give to the HTML. Then text editor for creating
for creating web pages where we can write the commands. It is Notepad. Okay, name of the editor is Notepad. Then what is tag? So tag is a HTML. It is a HTML command enclosed within angular brackets, okay, or we can say it is an angular bracket is like this, greater than and less than the angular brackets. Next is what is attribute? So attribute is additional information about an HTML element. But element and tags both are same thing. So these are the very short questions. Okay, what is attribute? Additional information about an HTML element. Then the syntax of HTML command. HTML tag. तो HTML tag में आप syntax कैसे होता है इसका? Here first we take tag name, okay. Then we take attribute equal to its value, okay. Then angular bracket close. This is the syntax. So tag name पहले लेना है. Then you will take attribute. Then you will take the values within single or double quotes. Next is two types of tag. One is container tag, container element you can say, or tag. Okay, in this we include examples are it has starting and closing. Clear? Examples are B tag, I tag, font tag, paragraph tag, HTML tag, head tag, table tag, anchor tag, marquee tag. All of these tags are container tags. Then empty tag or element. So in this way include example is BR tag, HR tag, clear? Then image IMG tag. These are all of these tags are which one? Empty tags. Empty tag means it has starting, no any closing. Next is what is the full form of XML? Another full form. XML. It is a language in which HTML created. तो HTML किस लैंग्वेज में बनी है? XML में. तो XML लैंग्वेज में हमने HTML बनाई हुई है. तो its full form is extensible. X here not here. X means extensible. Markup language. It is a set of rules for encoding document in machine readable form. Okay. So this is the full form of XML.
Next is there are some tags. I'm writing some tags. You will write down the full form. इसकी full form क्या है? ठीक है? Full forms. Yes. P tag. Yes. Raise your hands. Full form is yes. Class 8. Quickly reply beta. Yes. Anmol. P tag. Paragraph tag. Very good. BR. Sir, line break tag. Yes. Line break. Okay. HR. Yes. Horizontal rule. Horizontal rule. It is used to draw one line. Then A tag. Yes. Hurry up. Give the answer. A. Yes, Bhavika. Anchor tag. Anchor tag. Good, beta. IMG. Yes, Anve. Image tag. Image tag. Very good. Then H1. It is heading tag. Heading 1. Heading level 1. Okay. Otherwise, we can write it just like HN. Here N may be from 1 to 6. Clear? तो इसमें हेडिंग में आप एन यहाँ पे एच एन लिखा है. एच स्टैंड फॉर हेडिंग. एन मीन्स नंबर. नंबर यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं. H1 is the largest element and 6 is this H6 is the smallest one. Then U tag. Yes, who will give answer? Bani, give the answer. U tag. Sir, underline. Underline. Very good. I tag for italic. Then so these are the different full form of different tags. OL stand for order list. UL stand for unordered list. Clear? These are the full forms. तो पेपर में full forms भी आ सकती हैं. Then next one is attribute of body tag. Who will give the answer of this one? Attributes of body tag. Who will tell the attributes of body tag? Javan. Yes, Javan, unmute yourself, beta. Gunur. सर सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता. अभी आपको बता रहा हूँ. रिमेंबर दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग. बॉडी टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट है? BG कलर. इट इज यूज्ड टू सेट बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड, अगर आपने कोई इमेज लगानी है बैकग्राउंड में तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है. अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट. टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं इसके बॉडी टैग के. गुनूर क्लियर? यस सर. नोट डाउन. सर आई की फुल फॉर्म इटैलिक टैग है ना? यस बेटा, इटैलिक. ठीक है, नोट डाउन. एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग. ओके, देन attributes of font tag. Who will tell? Anve, unmute yourself. Yes, sir. Sir, size, One is space,
with a size, very good. Space, and third one, थर्ड वन सर color. याद नहीं आ रहा कलर Okay, three attributes, only three attributes. Size, ओके सर ठीक है, तो साइज अगर आपने देना है, साइज इंक्रीज करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं दोनों की एग्जांपल दे देता हूँ। ऊपर बॉडी टैग में, अगर आपने बॉडी टैग में बॉडी टैग बीजी कलर इक्वल टू येलो, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ओके, देन टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड, टेक्स्ट का कलर रेड होगा, ठीक है। टॉप मार्जिन आपने ले लिया 5 एंड लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू 5। तो ये आप मार्जिन सेट कर सकते हो। टॉप में कितना गैप आएगा बॉटम और लेफ्ट में कितना, जितना टॉप में होगा उतना बॉटम में होगा, जितना लेफ्ट में होगा उतना राइट में होगा। तो देन इज, अगर हमने फॉन्ट टैग लगाना है तो फॉन्ट साइज इक्वल टू 3, मैक्सिमम साइज इज 7। ओके, देन फेस इज इक्वल टू एरियल, देन कलर इक्वल टू ग्रीन। तो जिस भी टेक्स्ट के साथ लगाओगे उसमें ये फीचर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सपोज हियर इज माय स्कूल नेम इज SSDPS, आपने फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया, तो फॉन्ट जो SSDPS है उसका साइज 3 होगा, फेस में उसका एरियल होगा एंड कलर ग्रीन। नेक्स्ट, attributes of HR tag. Who will tell? Yes. Astha, unmute yourself. Better quickly give the response, better. Avni. Astha, give the answer. Attributes of HR tag. Yes, Avni. Bhavika. Bani. Yes, sir. Attribute of HR tag. सर ये वाला नहीं आता। So note down. First is size, then width, align, then no shade and color. These are the 5 attributes of HR tag. Remember this. These are the 5 attributes of HR tag. Then attributes of OL tag. In OL tag, there is a 2 attributes: type and start. Okay. Attributes of UL tag. There is a 1 attribute only, that is type. Then attributes of
P tag, paragraph tag, P tag and H1 tag. Okay, there is only one attribute, aligned. Attributes of IMG tag, image tag, SRC source, height, width, align, then the ALT, alternative text, border. So these are the attribute of image tag. Total 6 attributes. Attributes of marquee tag. Okay, in the next chapter, there is one topic, marquee. Marquee is used to give the movement to your text or your any component. Maybe image को भी आप marquee लगा सकते हो. So attributes are width, height, behavior, VG color. Okay, these are the attribute of marquee tag. Attributes of table tag. So table tag has the attribute align, VG color, background, to set an image as a background, then self padding, self spacing, so these are the attribute of a table tag. Now there is also border, then border color. So these are the total 7 attributes of a table tag. Attributes of TR tag. So in TR, there is a align, PG color, background. Okay, ये आप different attributes use कर सकते हो इसमें. And attributes of TD/TH tag. These are again align, BG color, background. So these are the different attributes. Next is, now who will tell the difference between TD and TH tag? Who will tell? Yes, hurry up, better give the answer. Anvay, give the answer of this question. Yes, sir. Sir, Difference between- TD tag is used to enter data in table rows, while TH tag is used to define the table header. Yes, beta. Little bit your definition is not appropriate. TD stand for table data. TH stand for table head. Okay. In both of these tags are used to insert data in cells, but in the case of TD, text is left aligned and normal. But in the case of TH, data is center aligned and bold. Anvay, clear? Yes, sir.
Okay. Next is attributes of A tag. A tag means anchor tag. Then there is a in your book, otherwise there are different attributes, but in your book there is a href. href. Okay. Yes, Bani? सर एक बार ये डिफरेंस रिपीट कर दो. Yes, beta. Beta, TB or TH tag, both are used to insert data in cells. तो TH और TD tag सेल में डाटा एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं. दिस इज सिमिलैरिटी. क्लियर? पर इनमें जो डिफरेंस है, इन TD text will be normal and left aligned. Clear? But in the case of TH, contents will be centralized, center aligned and bold. Bani, clear? Yes sir. Okay. Now, so these are the attributes. I will send it to you beta, तो आप इसमें से revision work कर सकते हो. Next, मैंने एक टेबल ड्रॉ करना है. ठीक है, आई एम गोइंग टू इंसर्ट वन टेबल. तो वो मैं टेबल की कोडिंग आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि टेबल आपने कैसे ड्रॉ करना है. तो पेपर में हो सकता है कि टेबल आ जाए आपको बनाने के लिए. तो आपने टेबल की कोडिंग कैसे लिखनी है, कैसे भी आप टेबल की कोडिंग को डिफाइन करोगे. तो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहा हूँ इन MS Word. So you will have to write the coding of this. तो मैं साथ में कोडिंग भी यहाँ पे लिखूंगा, तो आपने कोडिंग को भी नोट करना है आपने, because in your exams there may be some practical questions. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तो डिफाइन कर रहा हूँ. So here I am taking here serial number, here name, here grade. पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? राइट डाउन दी HTML कोडिंग ऑफ फॉलोइंग. ठीक है, तो आपने इसकी कोडिंग को कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर रहा हूँ. Grades are A plus, then A, and your first row is bold and center aligned. ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग द कोडिंग फॉर टेबल ऑनवर्ड. ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्लीट कोडिंग नहीं लिख रहा, मैंने आपको सिर्फ टेबल ऑनवर्ड लिख रहा हूँ कोडिंग. तो स्टार्ट विद द टेबल टैग. Border, because without border tag the lines will not be visible, so I am taking border 3. Then first is you take TR, then TH, because text is bold and center aligned. Close TH tag, then start TH again. Second one is name. Again it is bold and center aligned. That's why I am taking here TH. So 3 times I will use TH.
After that, my row will be closed. TR closed. Then start TR again. अब मेरे second row में again 3 cells हैं. But these are normal text. One is roll number 1. Then here is Bindu. TD is closed. This question is also given in your book, beta. Page number 130. Then grade is A. So after 3 cells, row will be closed. And I am going to start another row. TD, row number 2. Then TD, Yogesh, close TD. Then third TD, here is grade, that is A plus. So now close the row, start the last row, TR, start the last row, use TR, then again 3 TD. First TD is roll number, second TD is the name, third TD is the grades, that is A. After that, close the TR and close table tag. So this is the coding of table. Any doubt in this?